My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content hold. एवरीवन, दिस इज मीशा, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन कस्टम मेनिया। सो दोस्तों, जैसे कि टाइटल और थंबनेल में आपने देखा होगा, आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी कार के अंदर एक स्टीयरिंग कवर को, जो कि स्ट्रेचेबल स्टीयरिंग कवर है। आप किसी भी कार, किसी भी एसयूवी में इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश करी इसे अच्छे से फिट करने की, बट फिर भी उतना प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं। फिर भी मैंने कोशिश करी अपनी साइड से। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने काफ़ी सारी बातें ऐसी बताई हैं जो आपको इसके इंस्टॉलेशन में काम आएंगी। ठीक है, तो जब भी आप इसे अपने घर में इंस्टॉल करना चाहें, आप कर सकते हैं। इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग इसकी 250 या फिर 300 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं।
within the maze within the ain't nobody perfect. Something in my mind. Maze within the maze within the ain't nobody perfect. 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 Cause I don't want nobody change me now. Cause I like to be myself. If you're not agree, you can walk away. You can walk away. You can walk away. Something in my mind. Maze within the ain't nobody perfect. Something in my mind. Maze within the ain't nobody perfect. 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 सो गाइस आप देख सकते हैं ओवरऑल फिटिंग हमारी हो चुकी है पूरी कंप्लीट। पर थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम मुझे लगी है वो आपको भी लगेगी शायद से। देखो सबसे पहले तो इसमें एक दो चीज़ें जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि जब तक आप ज़्यादा गैप रखोगे बीच में तो अच्छे से नहीं हो पाएगा स्टिच। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने गैप थोड़ा सा कम कर दिया था, हमें बहुत अच्छे से स्टिच हो चुका है। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे हो रहा था, हमने यहाँ पे डबल करके ऐसे स्टिच कर दिया, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी बात रही फिटिंग की, तो फिटिंग भाई ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, बाकी तो उतना कोई जस्टिफाई नहीं हो रहा है, बाकी ओवरऑल सही लग रहा है। और थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती रहती है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गैप ज़्यादा ही रहता है ना इनके बीच में, जो इसके स्पोक्स के लिए जगह चाहिए होती है, तो फिटिंग इतनी अच्छी नहीं आ पाती क्योंकि भाई इतने प्रोफेशनल तो है नहीं हम कि बिल्कुल जैसे फिट है वैसे ही करके दे दें। बट फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करिए और भाई अच्छे से फिट हो चुका है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो आपने इतनी एंड तक देखी है तो। सो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी कार मॉडिफिकेशन, बाइक मॉडिफिकेशन, कार ड्राइवर ट्रिक्स और बाइक ड्राइवर ट्रिक्स मिलते रहते हैं। तो मेक श्योर आप बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। तो मिलते हैं इससे अगली मज़ेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कस्टम मीनिया शाइनिंग ऑफ।